afternoon, students. This lecture we are going to start with the next topic in graph theory after completing the terminologies of graph and the graph representation techniques. In this lecture, minimum spanning tree would be a topic for discussion. In this lecture, we'll try to understand what is a spanning tree and why it is called as a minimum spanning tree. And then in the next lecture, we'll talk about what are the two basic algorithms that we have to cover to create a minimum spanning tree from the given graph. And the two algorithms, as in the disabled section you can see, are Kruskal's algorithm and the Prim's algorithm. So first we start with minimum spanning tree definition. What is a spanning tree first of all? If I say a graph is a set of V and E, V stands for vertices, E stands for edges. So a spanning tree would be a subset of the graph. That is, a spanning tree would have all the edges which are there in my main graph except for one or few. Formally, a graph is a subset of graph is a set of V and E, and the spanning tree E dash belongs to E such that U belongs to V. That is, we say that the subset of edges spans all vertices. This means that when you create a spanning tree from a given graph, see this example. Here it says when the sum of the edge weights in a spanning tree is the minimum or overall spanning trees of a graph. Suppose let's say if we have this graph A, B, C, D, E, F. This is a weighted graph because all the edges have been marked with numbers. Now if I have to create a spanning tree, I can remove any of the edges that are resulting into the cycle. So हो सकता है what we can do is we remove D, E and E, F, and I create a spanning tree like A connected to B connected to C and B connected to D, E and F. Okay, there are no more connections of AD, BE, EF or CF. So there will be no cycles at all. There can be other also multiple possible ways to create a spanning tree. But what's so special about minimum spanning tree is we'll have to be very careful when we are selecting the edges into a spanning tree, provided they have the sum of the edges lies to the minimum value. If you look at the given figure, all the edges which are marked by red color, they have been selected to create a tree. So there is an edge A to B 2, weight 2, B to C, weight 4, then B to F, weight 1, B to E, weight 3, and D to E, weight 2. So you can see we have selected all the minimum possible values as edges like 1, 2, 3 and 4. And we have also kept into consideration that cycles are not forming. If you just discard those edges which are marked in black color, that is 4, 4, 5, 5. These 4 edges, if they are removed, so this results into a spanning tree and the total of all these edges is minimum. Okay, so if you find out the total of all the edges is 2 plus 4 6 plus 1 7 plus 3 10 and plus 2 12. So the total weight of all the edges into the given spanning tree would be 12. Now what if it says suppose BF is removed, B to F is the weight 1 edge is removed and CF is added. If you add CF into it, okay, BF को हटाकर आप ऐड कर दीजिए CF, तो वेट क्या हो जाएगा टोटल? वो हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 प्लस 2 16. तो स्पानिंग ट्री तो बन जाएगा A B C F और B से E और E से D. कोई साइकिल नहीं बन रही, मगर टोटल वेट ऑफ एजेस क्या आएगा 16, विच इज़ मोर दैन the total weight that we are getting in the given example, that is 12. So the given example is example of creation of minimum spanning tree. Okay, now to start with, there is an algorithm known as Kruskal's algorithm, which is a very simple algorithm which says you start with any vertex of your choice from a given graph. फिर second step is consider less weight edges first to incrementally connect components. The same thing that I have repeated. अगर हम इस example की बात करें, back to this example,
ये ग्राफ है, इस ग्राफ में सबसे पहला वर्टेक्स हम कौन सा चूज़ करेंगे? आई कैन चूज़ एफ और बी बिकॉज इसी पर ये एज लगी है, सो मिनिमम वैल्यू की 1. तो लेट्स से आई हैव चोजन द एज बी. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स हमने अपने ट्री में लिया बी से हमने 1 वाली एज सिलेक्ट करी और एक वर्टेक्स ऐड करा एफ. अब बी से और एफ से सारे पॉसिबल वेट्स देखते हैं. तो नेक्स्ट हमें वर्टेक्स मिलता है ए जिसका वेट है 2. तो बी से मैंने ए को कनेक्ट कर दिया. तो अब 3 वर्टेक्स वाला ट्री बन गया, ए बी और एफ. अब ए से बी से और एफ से देखते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है. तो हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिल रही है 3. तो हम बी से ई की तरफ आते हैं और एक नया वर्टेक्स ई ऐड करते हैं अपने ट्री में और वी हैव ई इनटू अ ट्री नाउ. तो नाउ माई ट्री कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टेक्स, ए टू बी टू ई एंड बी टू एफ. 4 वर्टेक्स ऐड हो गए. अब हम ई और बी ए एफ चारों को देखते हैं. चारों पे मिनिमम पॉसिबल एज हमें कौन सी मिल रही है? वी आर गेटिंग 2. ई पे 2 एज मिल रही है हमें ऑफ द वेट 2. तो ई से हम डी की तरफ जाते हैं और डी वाले वर्टेक्स को ऐड करते हैं अपने ट्री में और 2 ऐड हो गया. अब टोटल आई हैव 5 वर्टेक्सेस एडेड इनटू माय ट्री. नाउ आई एम लेफ्ट ओवर टू सी. हाउ टू इंक्लूड सी इन माय ट्री? तो C can be included via F and C can be included via B. But I find more convenient to include C via B because वहाँ पे weight 4 मिल रहा है. अगर F के थ्रू C को include करेंगे तो weight 5 मिलेगा. तो better है we include C into my tree through B. तो weight मिलेगा 4 and thereby my tree is complete. No more cycles are there and if I calculate the total sum of all the edges that comes out to be 12, which is the minimum possible. This is according to Kruskal's algorithm. So you can theoretically go through Kruskal's algorithm. You start with any vertex, consider less weight edges first and then incrementally add the other components. Make certain to avoid cycles. Obviously tree है तो कोई cycle नहीं होगी and you have to continue this until the spanning tree is created. So if this another example for Kruskal's we'll take up. इस ग्राफ में सबसे पहली एज जो हमने इंक्लूड करी वो ए टू डी. 5 वेट की थी. 5 इज़ द मिनिमम पॉसिबल वेट. या तो मैं ए डी इंक्लूड करती या मैं सी ई करती. तो पहली एज हमने इंक्लूड करी ग्रीन से ए टू डी. दूसरी एज हम लोग ने इंक्लूड करी सी टू ई. 2 5 वाली हो गई. अब नेक्स्ट एज आपको दिख रहा होगा कौन सी करेंगे? ऑब्वियसली डी टू एफ सी. नेक्स्ट स्टेप में हम डी टू एफ को इंक्लूड करेंगे. अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट फिगर क्या मिल रहा है? 7 वाली एजेस दैट इज़ या तो ए से बी पर आइए या ई से बी पर जाइए. तो anything that you can do. I have taken A to B in this example. So I have included A, B, D, F, C and E. बचा क्या? G. G has to be connected. Now G के पास आने के लिए I have the various other ways. Next stage after 7, what I can have is first of all we'll have this F to E. तो you can see here B to 7 वाली एज आ गई. बी टू ई 7 7. अब 8 और 9 और 11 बचा. नेक्स्ट हम इंक्लूड करेंगे 8 वाली. मगर 8 वाली इंक्लूड करने से साइकिल बन जाएगी तो नहीं करेंगे तो 9 वाली करेंगे ई टू जी. और ई टू जी करके नाउ माई आंसर इज कंप्लीट एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू क्रूस्कल्स एल्गोरिथम. ओके, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर at this example. Now this graph, you can revisit this video to understand clearly what is Kruskal's algorithm, and for Kruskal's algorithm the steps have been given over here in this slide if you want to go through it. Okay, this is A is equals to 0 for each vertex that belongs to the graph V. Make set V for each the order of UV. You have to keep on increasing and finding the set of edges for it. Thank you.